Morning students, welcome to Commerce Campus Odisha. Today we'll start with the most important part of CMA Intermediate's law, that is company law. ठीक अच्छी company law carries almost 30 to 40 marks. To be honest, say 40 out of 40 marks doni, but 35 marks compulsorily दोच, including bit questions. बुझिपाला? तो company law रो बुझिबाडा जेतिकी essentiality अच्छी, note बनायारे सेतिकी essentiality अच्छी हम. Clear? Here the first thing required is preliminary topic, preliminary introduction here. बुझिला ना preliminary introduction रे हमको केतिकी जिंस relevant अच्छी सेडा में note down करिया आ केतिकी जिंस relevant नहीं सेडा में skip करिमा. In the further classes तुमको detailed lecture दिया हो. Detailed lecture in the sense कौन ना individually note बना हो with respect to each chapter and say chapter रू note पढ़ा हो. बुझिला? For the introductory part, we are taking the textbook ताकि हमें आज ही scroll down करी पारिया कि company law रे कौन अछि. Company law I am considering this as a separate subject. इमती नहीं कि law रो एडा गुट्टे part. I am considering it separate subject. बुझना? तो company law रे केतरा ना section अछि. बहुत section अछि हमारा. सेथरे बहुत provisions अछि, sub provisions अछि, sub sections अछि. तो को aspect रो case law आसबो सेडा तमे in detail बुझले जाएगी जाने पारे. तमे कंपनी लॉ स्टार्ट करबा आगु गुठरे स्कैनर टा चेक करो. गुठरे स्कैनर टा इन डिटेल एनालिसिस करबो कि को पोर्शन रे एक्चुअली क्वेश्चन आसुछ. हैला तमे देखिबो कि डायरेक्टर चैप्टर रो 3 मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस अछि. 3 मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस गुटे होची डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर रो डिस्क्वालिफिकेशंस एंड डायरेक्टर्स रो ड्यूटीज. ए तीनटा जिंस को धरि कि बारंबार क्वेश्चन आसुछ. ता माने कोन हम बाकी सब छाड़ देबा कि नाही. एंड आउ गोटे जिनस तुम जानथिबो कंपनी लॉ रो जेतळको 30 मार्क्स मु कहूची वी हैव टू एस्पेक्ट्स इन इट. गुटे होची डायरेक्टर्स, गुटे होची डायरेक्टर्स, गुटे होची अदर देन डायरेक्टर्स, अदर देन डायरेक्टर्स. बुझी पालो? डायरेक्टर्स रो डायरेक्टली 15 मार्क्स आछी, अदर देन डायरेक्टर्स रो 15 मार्क्स आछी. एडा होची कंपलसरी से 40 वेटेज देछि, बट व्हाट्स कंपलसरी इज 15 15 आछुची बाध्य होइग्री. बुझला? तो हियर डायरेक्टर चैप्टर रो 15 मार्क्स स्कोर करियाडा रिलेटिवली इजी विथ रिस्पेक्ट टू दिस. काहे एडी 15 मार्क पे तुम बहुत किछि जिंस पढियो पड़ियो, बट एडी बहुत कम जिंस पढिबो पड़ियो. क्लियर? तो बट आउ गोटे जिनस कोन डायरेक्टर्स रो जेतिकी भी क्वेश्चंस अछि एडा न थाई कि एडार कांसेप्ट क्लैरिटी न थाई कि तमे एडा आंसर करि पारिबोनी. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी करि पारिबोनी. तमे अटेम्प्ट करि कि देखि पारियो. काहेले डायरेक्टर्स रो ड्यूटीज तो तुमको नॉर्मली गूगल रे सर्च करले भी मिल जिवो. बुझि पारछ ना? दैट्स व्हाई. तो एडा होची सिनेरियो. तुमको आज इंट्रोडक्टरी पार्ट टेक्स्ट बुक रे पढाबो. फ्रॉम द अपकमिंग क्लासेस तुमको डिटेल मटेरियल दियाबो. जेतिकी दरकार सेतिकी मटेरियल दियाबो. You need to have a complete practice of the scanner questions. Simultaneously scanner questions practice करिवो. आज जे जेतिकी क्लास हेची, जेतिकी नोट्स मु देची, सेडा एकदम स्कैनर को मैच कलाडा अछि. That's why complicated लागुची. एंड गुटे जिंस कोन एडा एक्सेप्ट करियर अछि कि टेक्स्ट बुक रे जेतिकी जिंस दिया हेची सेतिरे स्कैनर क्वेश्चंस आंसर होनी. हां ना नहीं स्कैनर क्वेश्चंस सेतोर तमे ट्राई करियो गुटे भी क्वेश्चन आंसर हबनी. बिकॉज इंस्टीट्यूट रो गुटे बैड हैबिट अछि कि जेतिकी हम टेक्स्ट बुक रे दोची सेडा केबेले से एग्जाम रे पचरियो, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, ऑडिट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. केबे भी सिमिलरिटी रहबोनी. को जिंस पचरिबो न द इनर प्रोविजन से पचरिबो. बुझिला? दैट्स व्हाई हमको पेशेंटली दीडा जे जिंस कंपेयर करर अछि. बुझिला? तो आमे जंप करबा हमर चैप्टर को. टुडे इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास. जहां भी मु लेखेबी प्लीज नोट डाउन करियो. एंड कंपनी लॉ पे बेटर होबो जदी गुटे सेपरेट नोटबुक मेंटेन करबो अलग चैप्टर सहित जिन मिसेबनी. लाइक यू कुड हैव कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एंड वन नोटबुक, बट कंपनी लॉ पे अदर नोटबुक रखिबो. जेमिति कि कोन करबो कहूची मु फर्स्ट चैप्टर आडरो तमे इमिति मतलब फर्स्ट साइड रे पूरा चैप्टर जहां भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखिबो एंड पछाडरो तमे स्कैनर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करबो. दीडा जे जिंस गुटे नोट रे रहबा दरकार. एंड इन द रिमेनिंग क्लासेस तुमको चार्ट वर्क दिया हबो सेथरे जोडा कि तमे एग्जाम आगो दिन चेक करिकि किबा रिवाइज करे. हैला? So coming to the chapter, the first chapter is about company types, promotions, formation and related procedures. हैला? तो एतिकी जिंस जेति अछि हमरो सब मिक्स करिकि से देछि. We are dividing it into different chapters. The first part we are focusing on today is preliminary.
सी प्रॉब्लम होची कोडी को वर्ड बुझिया पे तो डायरेक्टली कहि परिबो किछ असुविधा नै वी कैन जस्ट ब्रेक इट डाउन एंड फर्दर जिवो कांगेले कहले गुटे कांसेप्ट न बुझी कि नेक्स्ट को गले देयर इज नो यूज मु एबे कहले जहां पर एग्जाम आगरे त मु डाउट असले कहले ताहा बट एग्जाम आगरे डाउट असले बुझिबाडा बहुत कष्ट बिकॉज़ यू हैव टू बी जंबल्ड अप एकदम सब कांसेप्ट मिक्स हे जेथिबो जो लागि तमो बेसी प्रॉब्लम क्लियर तो टुडे वी आर सीइंग द preliminary concept of company law. Preliminary concept of company law. Preliminary concept of company law. देखो से फर्स्ट कौन कहूँ द रोल ऑफ कंपनीज इज मल्टीफेरियस मल्टीफेरियस माने कौन इट हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स and each of us encounter the work of a company in almost every aspect of our lives हला कंपनी रा इंपोर्टेंस समस्त हम लाइफ रे रहूची and company is a business firm that is arguably one of the most convenient to conduct operations in and with the continuous amendments incorporation of the companies and doing business through these companies have been made easier बुझी पारछ तो से अल्टीमेटली कोन कहूची हमहु companies are making our lives easy बुझिला गुटे गुटे प्रोडक्ट पे गुटे गुटे कंपनी जेतो अछि वी आर मेकिंग इट रिलायबल से जिंसडा रिलायबल हे पारछि हम पई इट्स बीइंग इजी टू अस माने को जिंस पे हमें को कंपनी को अप्रोच करे सेला हमें जानि पारछु क्लियर तापर से कहूची कंपनी 2013 refers to a company as an association of persons please underline association of persons for economic purpose of carrying on of a business which could be for the purpose of gain or otherwise माने से कौन कहूची इकोनॉमिक पर्पस पे से काम करछि को भी कंपनी हो को भी सोल प्रोप्राइटर हो को भी पर्सन हो तार इकोनॉमिक बेनिफिट पे से काम करे बट अल्टीमेटली कंपनी माने कौन इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स सबुडो इंपोर्टेंट डेफिनेशन है ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स तो एबे लेखा प्रिलिमिनरी अंडर रे फर्स्ट कांसेप्ट होची हमरो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी meaning and definition of a company meaning and definition of a company first देखो the word company the word company the word company is derived from the word company is derived from the Latin word एमती लिखो COM with or together COM रो मीनिंग होची with or together आउ PANIS this means bread or meal ए जिनसटा कोन पे हिंदी ब्रेक कराला ए लैटिन वर्ड का पर्टिकुलरली कोन पे से नेला तमे देखि पाछो एडी से कहूची टुगेदर मील दीडा जब वर्ड मिसले टुगेदर और मील आसुची तो कंपनी वर्ड एडा रो कोन पे डिराइव हैला ना एडा होची एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो माने की काम करछथि तांकर मील अर्न करिया पे हैला बेसिक नीड्स पे कियले अर्न करछि इमति नै को जिंस पे की अर्न करथो बेसिक नीड्स पे की अर्न करछि तो जेतु बेसिक नीड्स पे की अर्न करछि तो ए दीडा लैटिन वर्ड हमरो यूज कराइछि तो कोन हमरो लैटिन वर्ड रो मीनिंग टुगेदर मील तो आ तळे लेखो
it originally it originally it originally refers to refers to an association of persons, an association of persons who took their meal together, who took their meal together. बुझी पार्चो ए पर्टिकुलर लैटिन वर्ड आप कौन पे यूज कराई छी क्लियर who took their meal together. से कौन कहूची कंपनीज एक्ट रो डेफिनेशन कौन देखो एडा होची कंपनीज एक्ट रो डेफिनेशन एज पर माने कंपनी रो डेफिनेशन एज पर द कंपनीज एक्ट. दिस इज द definition of a company as per the act, as per the act. बुझला कंपनी रो मीनिंग होची कंपनी इनकॉर्पोरेटेड or registered under the Companies Act 2013 or any previous law. Company registered or incorporated under the Companies Act or any other previous law. को एले एक्ट अंडर रे जदी किछि कंपनी रजिस्टर होची किबा कंपनी स्टार्ट होची कंपनी बिल्डअप होची तो सेडा कोन गय हमें कंपनी गय डायरेक्टली डेफिनेशन रा किछि मीनिंग नै. In its legal form a company is an artificial entity. एजा सब होची कोन हमरा फीचर्स तो से कोन कहूची in a legal form a company is an artificial entity where the identity of the members of the company is independent from the company itself. माने सब बळे खाली से मेंबर को धरि कि तार आइडेंटिटी बिल्डअप होबनी बुझिला ना कंपनी रो निजर गोटे आइडेंटिटी थाउच तो सेति पे सेडा कोन कहूछ हम आर्टिफिशियल एंटिटी कहूछ. इट्स एन आर्टिफिशियल एंटिटी लाइक अदर नेचुरल पर्सन्स अ कंपनी टू हैज मेनी राइट्स एंड लायबिलिटीज. कोन मिलछ ताको बहुत किछि राइट्स एंड लायबिलिटीज थाउच बहुत किछि राइट्स एंड लायबिलिटीज थाउच माने कंपनी आरो गोटे राइट्स एंड लायबिलिटीज इमति नै कि मैनेजर रो किछि राइट और लायबिलिटी अछि बुझला ना मैनेजर रो जहां भी राइट एंड लायबिलिटी अछि सेडा कंपनी रो पूरा पूरी डिफरेंट धीरे धीरे केबल मैच करिवन ईच थिंग इज टोटली इंडिविजुअल. द कंपनीज एक्ट 2013 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन. कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन माने कोन सेपरेट लीगल पीस बुझला ना कंपनी रो जहां भी रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस अछि सब जा कोन टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंपनीज एक्ट. माने जहां भी गोटे कंपनी रूल बनौची कंपनी किछि रेगुलेशन बनौची तो सेडा निज कंपनी निज पे बने इमति नै कि सबडा एक्ट रे जहां अछि सेडा आगा रूल हबो एक्ट रे जहां अछि सेडा से मानिबो मना नै बट निजरा किछि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी से बने एवरी कंपनी हैला. तो इट्स द फर्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट इंट्रोड्यूस्ड कांसेप्ट्स लाइक वन पर्सन कंपनी एंड मेड कंप्लायंस लेस कम्बरसम माने कोन जहां भी तमे एक्सेप्ट न करिया करे माने लॉ एक्सेप्ट करिया न अगर भी सेटा तम ऊपर लागू हे होची एंड बर्डनसम रहउनी जहां भी कंप्लायंस रेगुलेशन अछि सेटा बेसी बर्डनसम रहउनी बर्डन रहउनी समस्त पे इजी टू फॉलो रहउची एडा मीनिंग कोन इजी टू follow while incorporating a company बुझिला एबे त तळे लेखा features of a company features of a company features of a company features of a company केतरा फीचर्स अछि हमरो 7 features अछि. We have 7 basic features. Mostly तुमको features जहां भी सेडा बिट क्वेश्चंस रे पछछ हैला बीकॉम नाही कि सेडा डायरेक्टली से पछर दम 3 की 4 मार्क्स हैला. फर्स्ट थिंग होची वॉलंटरी एसोसिएशन सेकंड थिंग होची perpetual succession
perpetual succession. Third thing होची share capital. Share capital. Share capital. Transferability of shares. Transferability of shares. Transferability of shares. ପରେ ହେଉଛି ଆମର common seal. Common seal. Then ଆସୁଛି ଆମର limited liability. Limited liability. 7 number होची separate legal entity. Separate legal entity. Separate legal entity and corporate personality. And corporate personality. Separate legal entity and corporate personality. These are the 7 features of a company. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଟାର already idea ଥିବ. I am assuming it that 0 level ର ଆମେ ପଢୁଛୁ, that's why ମୁଁ again କହୁଛି voluntary association ର meaning କ'ଣ? Voluntary association ର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ association କରିବେ, and each individual person who has been associated has a voluntary identity. तार निजर भी किसी आइडेंटिटी अच्छी एंड कंपनी वाइज भी से टिकी आइडेंटिफाई. दिस इज वॉलंटरी एसोसिएशन. सेकंड थिंग इज परपेचुअल सक्सेशन. माने हाँ कंपनी चले तो कंपनी विल चले कंपनी विल गो ऑन फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स. दिस इज परपेचुअल सक्सेशन. बुझना. थर्ड थिंग इज शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल रो मीनिंग कोन ना जनरली जेतिक भी शेयर होल्डर्स अछंदी माने कंपनी भितरे इन्वेस्ट करिया पई शेयर होल्डर माने कोन चांस नै पारे. माने दे कैन इन्वेस्ट देयर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो द्वारा कोन ताकि कंपनी रो पार्ट हे पारे. आ पूरा पूरी ए अमाउंट मिसी के कोन होबा हमर शेयर कैपिटल होबो जोडा कि कंपनी इन्वेस्ट करिगी तार जहां भी एक्जिस्टेंस ता स्टार्ट करबी. दिस इज शेयर कैपिटल. तापर आछे हमर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स माने कोन? Shares can be transferred from one person to another. बुझला. एमती नाही कि से ता शेयर का से रखि पारियो कहिकी से कंपनी रो किछि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करिकी तारा जहां भी शेयर्स अछि से आराम से सेना ट्रांसफर करि परियो. तापर कॉमन सील माने कोन? कॉमन सील इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. इट्स एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी जोडा कि अटेस्ट हैला पारे आमे कोन विश्वास करे कि से कंपनी ना से डॉक्यूमेंट रे साइन करिछि. बुझला. दिस इज कॉमन सील. देन आसे लिमिटेड लायबिलिटी. हेले जणंगर लायबिलिटी केतिकी ताके जेतिकी अमाउंट इन्वेस्ट करछन्ती माने 1 लाख रुपीस सेतडो इन्वेस्ट हेछि गोटे 1000 शेयर होल्डर माने इन्वेस्ट करछन्ती के 500 करछन्ती के 200 करछन्ती के जिमिति भी करछन्ती तो तांकर कोन जदी कंपनी बुडी होला सडनली तो तांकर रिस्क ता केते छै जेति अमाउंट तांके इन्वेस्ट करछन्ती सेति अमाउंट पे तांके लायब तांको जदी पचारछन्ती तो सेति अमाउंट तांके पचारि. बुझला. दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी. सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉर्पोरेट पर्सनालिटी माने कोन? कंपनी एंड इट्स ओनर अलगा तार गोटे सेपरेट लीगल एंटिटी अछि एंड कंपनी इज अ पर्सनालिटी. तमे डीटी रे पढथिबो ऑलरेडी पर्सन्स रे हमर कोन 17 पर्सन्स अछन ना तो कंपनी इज आल्सो अ पर्सन. तो कंपनी को भी हम गोटे सेपरेट पर्सन कंसीडर करिया एंड इट हैज सम सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. बुझि पालो? क्लियर. दीज आर द फीचर्स ऑफ कंपनी. एतिकी सब से सेथरे कहला. तापर से कहछि देखो न्यू लॉ इज रूल बेस्ड लेजिस्लेशन विथ 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स. टोटल हमर कंपनीज एंड भितरे वी हैव 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स. आ तमे एतिकी सब पूरा जिंस फाइनल रे पढबो एंड कंपनी लॉ तमको सेतोड आसीयो 15 मार्क्स. टोटल 15 मार्क्स पे यू हैव टू रीड 470 सेक्शंस. बुझला. तो एबे जहां भी लेखि के रखिबो सेतोडको सेडा पढिबो. दैट्स व्हाई इंटर जहां भी अछि सेडा बहुत इंपोर्टेंट. इंटर जहां भी मटेरियल नोट अछि सेडा नथले फाइनल रे सर्वाइव हे परियोनी बिकॉज़ तमे ऑलरेडी जानथिबो फाइनल रे वी हैव सेबी.
सेबी रो लॉ अछि, आईसीडीआर रो लॉ अछि, आईआरडीए इंश्योरेंस रो लॉ अछि, बैंकिंग रेगुलेशन अछि हैला, आउ तार प्रिंसिपल्स अछि, कॉस्ट ऑडिट रूल्स, एतिकी सब मिसले जाइए हमर सभी लॉ होछ। बुझी पालो तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स पे तमे पूरा पूरी गुटे एक्ट पढिबो। तो दोस्ती बनाओ आपसे सीन दिया कौन करिया को तमे गुटे जिनसे जानथियो तमे जे जदी सीनियर्स अछि पचारियो ग्रुप 3 रो बेसी फेल हबार रीजन होची लॉ, कॉर्पोरेट लॉ फाइनल रो कथा पूछ बहुत थरे फेल हो जन बिकॉज एतोड़ा सिलेबस टा अधिक अछि सेडा प्रॉब्लम नै, सिलेबस टा कंप्राइज न करि परले सेडा प्रॉब्लम। सब जिंस बुझुथियो बट सब जिंस गुटे जागा आनी पार नथि, बुझिला ना, तो सेडा सबडो बड़ प्रॉब्लम फाइनल रो कथा कहछ। A company denotes an association of persons formed for the purpose of carrying on some business or undertaking. Already I discuss करछु तांकर गोटे common objective टा थाउची। A company is a corporate body and legal person having status and personality distinct and separate from the members constituting it. एडा भी हमें पढ़छु, it's one of the features. According to Companies Act, a company means a company incorporated under this act or any other previous law. से प्रीवियस लॉ कौन पे कहूची ना कंपनीज एक्ट तमे जानथिबो, कंपनीज एक्ट अगर 19 वेरी गुड 1956 रे गोटे अछि, देन 2013 हैला। तो प्रीवियस लॉ रे जदी किछि कंपनी इनकॉर्पोरेट हेगी अछि तो सेटा कोन हमें कंसीडर करिया नेकी करिया ऑब्वियसली, बुझला ना। तापरे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स रे सी एबे कोन देछि हमें अंडरलाइन करिया, it's a separate legal person and artificial person, separate legal person and artificial person. artificial person से कौन पे कहला man made हितबा दरकार, that's fine because से individually गुटे man नहीं, it's man made, तो there's a difference between a person and artificial person. It is distinguished from the shareholders of the company. This is the most important thing. जेतु सेडा shareholders of the company रो distinguish हेची, that's why हम सेडा कौन कहे separate legal entity कहे, बुझला। तो शेयर होल्डर्स जे भी अच्छे दे आर ओनली अ पार्ट ऑफ द कंपनी, इमती नहीं कि सेमाने आगा कंपनी रो ओनर्स कहि, दे आर द पार्ट ओनर्स, दे आर आल्सो द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट एंड कॉर्पोरेट एक्जिस्टेंस, कंपनी रो निजर किछि आइडेंटिटी अछि, से बारंबार सेडागा बोलछि। द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, प्लीज अंडरलाइन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू माने कौन, नॉमिनल वैल्यू माने इट्स द फेस वैल्यू। हां एमती नहीं कि मार्केट वैल्यू तार बढ़ी जाइछि शेयर्स रो तो आमे ताको अधिक पैसा मांगिया दे नहीं, ताको जो पैसा रे एग्री करेगी से कंपनी भितर आनिथिलु सेतिया पैसा में ताको मांगी पारे, ठीक अछि। The shareholders cannot be called upon to pay more than the unpaid value of his shares, माने जति 5 रुपीस होछि तार अनपेड तो 5 रुपीस आगा में मांगे, 5 रुपीस रो जदी हमें 3 रुपीस ऑलरेडी मांगी देछ तो वी कैन ओनली आस्क फॉर 2 रुपीस, माने एडा कोन हमर अनपेड वैल्यू, एडा होछ हमर पेड वैल्यू, शेयर्स रो अनपेड वैल्यू, शेयर्स रो पेड वैल्यू, बुझि पाला। दिस इज द अनपेड वैल्यू, तो शेयर होल्डर्स को हमें केते मांगी पारिया, ओनली द अनपेड वैल्यू। The shareholders cannot be called upon to pay more than the unpaid value of the shares, whatever may be the indebtedness of the company. माने एडा होछि निज ओनर एंड द पार्ट ओनर्स रो डिफरेंस। निज ओनर जे भी अछि से जदी कंपनी बहुत बुढ़ी लाडा स्टेज पड़ासला, इनडेटेडनेस पड़ेला, इनसॉल्वेंसी, तो से कोन करियो जाई अल्टीमेटली कार लोन आनियो कि लोन उठी आनिकरी से कंपनी को सर्वाइव करिया पे चेष्टा करियो। बट पार्ट ओनर्स जे भी अछंदी से माने कोन करिए, से माने जेतिक भी माने पैसा न देगी अछि खाली सेतिया का देई ताके कोन करिए हेल्प कर परिए कंपनी, इनडेटेडनेस भी हो कंपनी रो बट तांकर जेतिकी अमाउंट ताके देई नांदी ओनली दैट अमाउंट देली। देखो से कोन कहूची, the company has its existence from the time of incorporation to winding up, time of incorporation to winding up. Members may come and go but the company survives up to winding up. कंपनी रो एक्जिस्टेंस केते जे ना जेते जे से वाइंड अप हे, बुझला। The company is having the right to acquire and transfer properties in its own name, माने कंपनी रो मैनेजर अलगरे लैंड किनी की बिकी पारियो, कंपनी नारे अलगरे से लैंड किनी की बिकी पारियो, दीडा जिंस ही पारियो
हेले से को जिंस विषय कहूची कंपनी मैनेजर आगा जतलो कंपनी ना रे किछि लैंड ता किणुची देन लिखुची दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी कॉमन सील माने कोन कॉमन सील होची सिग्नेचर ऑफ द कंपनी signature of the company जोड़ा कि affix होची affix माने कोन we are stamping it affixing it in the documents such as contract etc since it is an artificial person and cannot sign on its own documents एरा तमे स्कैनर रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखथिबो माने 2017 रे डिसेंबर एमसीक्यू क्वेश्चन रे देखिबो से कोन पचारथिला हमहु देखिथियो पचारथिला कोन कि कॉमन सील जहां भी अछि कॉमन सील ऑफ द कंपनी को पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को धरिगिरी से कॉमन सील रो फीचर टा इंट्रोड्यूस करला को पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी वेरी गुड आर्टिफिशियल पर्सन बुझिला ना तो से मु एबे देडा जे लिंक करेली तमे बुझि पारछो संगे संगे पचारले बुझि पारछो तो तमे कोन करियो जेतोळ भी पढुछो तो ए पाखरे से पर्टिकुलर ईयर रो क्वेश्चन डा नॉले से क्वेश्चन डा आगा लिखि दबो सानो पेपर रे अटैच करदो नॉले बुझी पारियोनी से कोन कहूछ देखो कॉमन सील ऑफ द कंपनी कोन पे से इंट्रोड्यूस करला जेहेतु कंपनी होची गुटा आर्टिफिशियल पर्सन पर्सन हेले कोन करियो साइन करियो आ जो आर्टिफिशियल पर्सन हेले कोन करियो ऑब्वियसली स्टैम्प करियो हेले एबे सबुड इंपोर्टेंट अमेंडमेंट कोन आछि हमरो now the use of common seal has been made optional माने कोन voluntary not compulsory optional माने not compulsory as per the 2015 amendment to Companies Act को year रे अलाडा 2015 रे the Companies Act 2013 required common seal to be affixed on certain documents such as bills of exchange share certificates etc all such documents which required affixing the common seal may now instead be signed by two directors so कौन replacement हला देखो this is important here से कौन कहूची may be signed by two directors or one director and a company secretary of the company heading the common seal रो जहां भी questions आछे एग्जाम रे we have to write common seal official signature of the company official signature of the company which when affixed on a document makes it as effective as signed जहाँ भी जति हमें सिग्नेचर करछु तो केति की इफेक्टिव हबो कॉमन सील ला मारले सेति की इफेक्टिव हबो तो लेखो एग्जाम क्वेश्चन कोन थिला एथरे the feature of common seal is introduced with respect to the feature of artificial person of a company कंपनी रो को फीचर ना आर्टिफिशियल पर्सन रो फीचर आउट इंपोर्टेंट पॉइंट से कौन कहला एथरे
the compulsion of affixing होची हमर कोन लॉ लैंग्वेज affixing माने कोन attesting attach करिवार किबा attest करिवार affixing the common seal has been made voluntary. The affixing of common seal has been made voluntary as per Companies Act कोड़ा 2015 as per Companies Act 2015. Instead एटा कौन कहूची सी instead the documents requiring signature can be signed by two directors or one director plus company secretary. One director plus company secretary CS. बुझी पाला? बुझिला समझतो? The shares of the members except in the private company may be freely transferable. Except माने कौन? Private company रे सिए shares केबे भी transfer करि पारि. बुझिला? Shares केबे भी transfer करि पारि. Other than private company जो भी company रे हो shares freely transferable. So it's an important point. इतरे bit question आसे पारे. को particular company transferability of shares को prevent करछि किंबा exclude करछि ना private company. Being a separate legal entity, the company is having capacity to sue others and it can be sued by others. केले company ऊपर case file करि परियो and company का ऊपर ले case file करि. I think एथरे बुझिला features रे मु कहथिली से individually सब features रे तमु केबेले question पचरेनी each individual point को धरिकी एजे से case law भी frame कर दे पारियो नाले bit questions भी पचरे. Clear? Lifting the corporate veil. This is a concept. एडा गुटे कंपनी रे गुटे पार्ट नै दिस इज अ concept. Lifting of corporate veil रो basic idea कोन? एग्जाम रे आस्थिला हां आस्थिला 2 times. मु कहितली एडा गुटे important and directors से तीनटा parts important. Lifting of corporate veil is a frequently asked question. The separate personality of a company is a statutory privilege. Underline करो statutory privilege. Statutory privilege रो meaning कोन? Benefit especially given to companies. Benefit especially given to companies and may be used for legitimate business purposes only. को जिनस पर यूज करा होची legitimate business purposes only माने valid हैला ठीक ठाक business purpose पे only एडा यूज करा होची. Where a fraudulent and dishonest use is made of legal entity, the individuals concerned will not be allowed to take shelter behind the corporate personality. एडा होची तार सबबडो basic idea. से कोन कोची किछि fraudulent and dishonest काम करले गोटे legal entity द्वारा किछि fraudulent और legal dishonest काम करले illegal काम करले तो से माने कोन जे त हम पढिछु कि company is different from its members
तो मेंबर्स जे भी अच्छे से माने कहि परिनी कि मु करछे कंपनी करछि मते कोन फरक पड़छ इमती कहि परियने सी जेतु कंपनी द्वारा एडा हिची तो लॉ कोन कहूची जदी एमिति केसेस रे आमे डील करिया कि कंपनी और मेंबर्स सेम और मेंबर्स को आगे आमे धरिबा कंपनी ऊपर ना अछि कंपनी बंद हैला तो एमन जे अछंदी से माने पैसा खाइथिए जेतु से माने किछि फरक पड़ेनी कंपनी बंद हैला तो से कोन कहूची जेतु हमको रियल मॉन्स्टर्स दरकार आमे कोन करिया लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल माने कंपनी पछरे कंपनी रो पर्दा पछरे जे भी अछि बेलटा सेटा उठे के आमे देखिया कि हु इज द पर्सन रेस्पोंसिबल फॉर द इलीगल एक्ट दिस इज द बेसिक आइडिया तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल रो मीनिंग कोन removing the removing the cadre of cadre होचे हमरा लॉ लैंग्वेज बिल को cadre माने कोन पर्दा removing the cadre of corporate identity corporate bill रो जेतलो क्वेश्चन आछ तमे ए लाइन रे स्टार्ट करिवो देन ऑब्जेक्टिव लिखियो देन तार केस लडा स्टार्ट बुझिला फर्स्ट पॉइंट होचे एटा रिमूविंग द कैडर ऑफ corporate identity in order to find out the real reason of the fraudulent activities carried out in the name of the company तमरो एडा होची टोटल बेसिक आइडिया along with the objective तो इमती स्टार्ट करियो तापर लेखो एडार बिट क्वेश्चन कोन आस्थिला मन अछि कोन पचाला सी ना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल दा को फीचर ऑफ द कंपनी को टारगेट करछ एडा इंस्टीट्यूट रो फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिट क्वेश्चन पचारिया से पचाछि कोन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल मींस डैश लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल मींस डैश माने एडी कोन लिखिया हमें ना तारा मीनिंग लिखि दबा बट सेडार आंसर होची इग्नोरिंग द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी तो लेखो क्वेश्चन दा एडा एग्जाम क्वेश्चन lifting of corporate bill means ignoring the separate identity of the company separate identity of the company बुझी पाला एडा होची तार क्वेश्चन heading दियो separate lifting of corporate bill ता अंडर 7 पॉइंट्स अछि हमरो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल क्वेश्चन कोन आस्थिला लास्ट क्वेश्चन रे एग्जाम रे कॉर्पोरेट बिल रो मीनिंग तो गुड थरा आस्थिला तापरे मन अछि का कॉर्पोरेट बिल रो गुटे पार्ट को धरी से क्वेश्चन पचाथिला जदि के चेक आउट करियो देखो कॉर्पोरेट बिल रो गुटे पर्टिकुलर पॉइंट को धरी से क्वेश्चन पचाथिला प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू तमे जानि परियोनी मध्ये से ए कांसेप्ट रो पचाछि कई से प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू जहां भी क्वेश्चन पचाछि सेडा एडा धरी पचाछि क्लियर
तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल अंडर रे 7 पॉइंट्स लेखा. Protection of revenue, number 1. Protection of revenue. Protection of revenue. Prevention of fraud. Prevention of fraud or improper conduct. Prevention of fraud or improper conduct. Determination of enemy character of the company. Determination of enemy character of the company. Enemy character of the company, if any. तापरे where the company is a sham. Where the company is a sham. तापरे फिफ्थ पॉइंट होची company avoiding legal obligations. Company avoiding legal obligations. तापरे 6 पॉइंट लेखा company acting as agent or trustee of the shareholders. Agent or trustee of the shareholders. Last point होची avoidance of welfare legislation. Avoidance of welfare legislation. Avoidance of welfare legislation. बुझिला तो एडार तुम क्वेश्चन कोडार आस्थिला मु कहली नंबर 1 बुझि पालो तो प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू. तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल जहां भी अछि दिस इज एडॉप्टेड इन 7 केसेस. जनरली 7 केसेस रे हमें सेटा एडॉप्ट करछु. द फर्स्ट थिंग इज प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. गवर्नमेंट रेवेन्यू जेतळ भी प्रोटेक्ट होची माने गवर्नमेंट रेवेन्यू जेतळ खाइ दोची गुटे कंपनी टैक्स इराडिकेट करची तो से केस रे कोन करियो गुटे कंपनी से लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल करला परे के टैक्स इराडिकेट करची टैक्स टा के मिस होची सेडा से देखिगी पनिश करियो. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट. जानु चंदे से माने कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होची हला ताके कहउछन्ती इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेटर हबो तमे हम कंपनी भितर इन्वेस्ट करो कि जहां भी करो कहिगिरी जदि लोकन ठकी पैसा नोचंदी आ फेरो नांदी से केस रे कोन करियो कंपनी रे तो बंद हबो ता सहित कोन मैनेजर जे भी अछि से माने भी जेल जे को केस रे हेतिला एडा सत्यम इंडस्ट्री रे हेतिला पूरा सत्यम कंप्यूटर्स की कोन आ गोटे थिला चिट फंड कंपनी रे गोटे हेतिला तो सेडा कोन ऑल दिस थिंग्स आर लाइक एग्जांपल्स ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल.
तापर डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी एनिमी किए हमको एनिमी किए जे कि आ गोटे कंपनी को हार्म करिया चाहूची किंबा गवर्नमेंट को हार्म करिया चाहूची किंबा अदर कंट्री अदर नेशंस रो जे भी अछंदी से माने आसी कि जदी कंपनी भितरे कंपनी थ्रू रे इंडिया को किछि हार्म पहुंचाया चाहूचन हैला चाइना की जहाँ भी पाकिस्तान की जहाँ भी जो रूट आसिकी तांकर आइडेंटिटी चेंज कर देगी पूरा ताके कोन करछन इंडिया भितरे मिसिकी किछि प्लान करछन इंडिया रे हार्म करिया पे तो दैट इज आल्सो केस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल तो कंपनी कोन करियो इंडल्ज हेगी देखियो कि एक्चुअली एडा प्लान करूछि कि इमती किछि नेचर अछि where the company is a sham एडा तमे लेख ता तळे the courts also एडार केस लड़ा अछि दैट्स व्हाई मैं लिखुची the courts also lift the veil the courts also lift the veil or disregard the identity of a company where the company seems to be a mere mere clock clock or hawks HOAX एडा होची लॉ लैंग्वेज एडार मीनिंग होची जदी गोटे पर्सन जे कि ऑलरेडी माने ये रे अछि माने कोन कहउचंदी कोर्ट रो नजरिया रे अछि से ऑलरेडी चीट करछि बहुत लोकन से एबे कोन करछि से आउथरे आइडेंटिटी चेंज करके आउथरे गुटे जागा जाई गुटे कंपनी थ्रू रे तार फ्रॉड ता चलीछ तो जदी ताको इमिति लागिला कि गुटे कंपनी अगेन इमिति बिहेव करछि गुटे पर्टिकुलर पर्सन अलगा तार आइडेंटिटी चेंज करके किछि एक्टिविटी करछि तो सेडा को हमें शाम कहबा हैला इट्स अ वर्ड गिवन बाय लॉ तो एडा को केस लॉ अंडर रे हेतिला प्लीज राइट डाउन गिलफोर्ड कंपनी लिमिटेड वर्सेस Continental HORNE Limited Guilford Company Limited versus Continental Horne Limited बुझला तापर देखो से कौन कहिछि where the use of an incorporated company is being made to avoid legal obligations जहाँ भी अच्छी हमरो कंपनी कौन करछि लीगल ऑब्लिगेशंस रो बंचिया पे चेष्टा करछि माने जदी मनर गोटे पर्सन रो बहुत किछि पैसा आछि इनकम आछि तो पैसा इनकम गोटे पर्सन रो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कम रहउछि गोटे कंपनी रो तो से कौन कहयो से कंपनी को पैसा ट्रांसफर कर देबो आ कहयो कि एटा कंपनी रो इनकम कहि कि से आ टैक्स बांध दियो तो से केस रे कोन हबो से केस रे से लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल करी देखियो कि एक्चुअली एटा ता इनकम ना कंपनी अर्न करतबा बुझना तापर एक कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स ता माने कोन शेयर होल्डर्स माने जे भी अछंती से माने कोन पार्ट ऑफ द कंपनी ताकि डिविडेंड अर्न करिए किबा ताकि शेयर्स बिकि देबे कि शेयर्स किने कि रखबे तो जदी गुटे कंपनी रो पर्सन तांकर सांग होई जाउछि तो कोन हबो जदी कंपनी रो किछि लॉस वगैरह हेबा चाहउछि तो से कोन करे ताको इन्फॉर्मेशन दे दबा से कोन करे से बिकि दबा से जिनसडा तो तार किछि लॉस हेलानी तो आ द्वारा कंपनी को लॉस होला ना नहीं कंपनी रो जहां भी रिस्क ही थांदा सेडा जति की पर्सन्स अछन्दी समस्त भीतर डिस्ट्रीब्यूट हे जेथा समस्त भीतर डिस्ट्रीब्यूट हे जेथांदा आ एबे कोन कला से पर्सन जे तो बिकि देला शेयर्स तो ता लागि कोन हला कंपनी रो रिस्क ता बढ़ी गला तो एडा जतळ कंपनी जानबो तो से देखियो कोन के पर्टिकुलरली अछि जे कि शेयर होल्डर किबा एजेंट मानन को हेल्प करछ एजेंट मानन कोन करछि हेल्प करछ शेयर होल्डर मानन को इंफॉर्मेशन दोछ दैट इज कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स एक केस रे भी से देखियो
एवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन माने गोटे कंपनी थ्रू रे कोन करचंदी सोसाइटी रे जहां भी पीस ऑफ माइंड अछि सेटा डिस्ट्रॉय करछन ताकि इमिति प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करचंदी जेंति कि सोसाइटी रो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हबो जेमिति कि देखो जहां भी गोटे एबे गोटे एक गेम अछि से गेम टा मेंटली समस्त को डिस्टर्ब करछि तो से केस रे मध्ये सेटा कोन गोटे फ्रॉडुलेंट जिंस आगा हैला वेलफेयर लेजिस्लेशन अगेंस्ट जिपा जिंस आगा है बुझी पाला ना नहीं किछि डाउट अछि क्लियर देखि पारे बहुत थोड़ा देखो ए जो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी नहीं सेटा ए अंडर आसे वेलफेयर लेजिस्लेशन अंडर आसे प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी टेक्स्ट बुक रे जहां देछि देखो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू रे हम ऑलरेडी डिस्कस करछु डिटर्मिनेशन ऑफ एनवी कैरेक्टर रे से देछि देखो डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड आमे जोडी लिखि जे देखो where the company is sham तो से कौन कहूची एनिमी कैरेक्टर और श्याम टा मिसेइची बुझला दीडा जा जिंस कंफ्यूज हबनी दीडा जा जिंस रे केसटा अछि काहे कि जो भी पर्सन अछि जे भी डिसेप्शन करछि हमें कौन पढ़लो श्याम रो मीनिंग होची जो पर्सन जे कि ऑलरेडी पुलिस धरचंदी कि से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी रे अछि कहिके से कोन अगेन गोटे कंपनी थ्रू रे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी रा चलेछि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी रा चलेछि तो जेतोले जानिबो तो से दीडा जा जिंस कवर होछि ना नहीं श्याम भी होछि और एनिमी कैरेक्टर भी कवर अप होछि तो दैट्स व्हाई जो केस लड़ा कहला सी ए अंडर रे आसला गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न तापरे वेलफेयर लेजिस्लेशन रे गुटे केस लो कहला तुमको क्वेश्चन केमती आसीबो मु कहूची इधर ताको जदी बेसी डिफिकल्ट क्वेश्चन दबार अछि तो व्हाट ही कैन डू इज केस लोडा मेंशन करिकि तुमको पर्टिकुलर पॉइंट ता पछरे जे ऑलरेडी एग्जाम देछो दे मस्ट हैव फेस दिस तुम जाना भी पड़ियोनी कि को कोन रे क्वेश्चन दा आछि दैट्स व्हाई एटा जतरा मु पढोची सेतोला आगा मु क्वेश्चन टाइप ता कहि दोची ताकि से पाखर लिखियो एबे जे से जानि पालानी कि से पर्टिकुलर रेवेन्यू डा को अंडर रे आसिला बुझिला ना तो सिमती भी थाउची क्वेश्चन सिमती थाउची कोन सिमती का थाउची क्वेश्चन तापरे लेखो सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 1 हमरा इंट्रोडक्टरी पार्ट रे आछि दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग सेक्शन नंबर 1 section number 1 of the companies act section number 1 of the companies act आरा ना होची short title comma extent comma commencement and application short title extent commencement and application short title कोन आरा माने एडा पे गोटे सेक्शन गियले भाबियो तम short title कोन आरा कंपनीज एक्ट 2013 मैट्रिमोनी साइट रे किंदी ना गा सब जा देबे केबे जाई हिची केबे जन्म हिची सिंदी सेक्शन नंबर रे कोन दोछन तार इंट्रोडक्टरी पार्ट दोछ कंपनीज एक्ट 2013 एक्सटेंट
माने केते जे एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया commencement with effect from 30th August with effect from 30th August 2013 with effect from 30th August 2013 तापर लिखो applicability of the act applicability of the act 6 points से कहिछि first as हमरो companies incorporated under this act or any other previous law first definition रे से कहला companies incorporated under this act or any other previous law or any other previous law or any other previous law second lekha insurance companies to the extent inconsistent with the insurance companies को act under आछि के कहि परियो ना number 9 which act insurance companies जानना IRDA Insurance Regulatory Development Authority with to the extent inconsistent with the IRDA Act बुझि पाला एडा होची 1999 नंबर टा ठीक कहला 1999 Insurance company to the extent inconsistent with the IRDA Act 1999 banking companies to the extent inconsistent with Banking Regulation Act with Banking Regulation Act 1949 एडा होची बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अंडर माने से कोन कहया चाहची इंश्योरेंस कंपनीज जेतिके भी अछि सब जा इंश्योरेंस एक्ट अंडर आसिया बट जो एक्ट अंडर आसुनी से कंपनी रो कोन हबो से माने समस्त को शेल्टर दोची कंपनी सेक्शन नंबर 1 टा सेडा कहया चाहची देन से कोची इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज to the extent inconsistent
with Electricity Act 2003, with Electricity Act 2003. Last points कौन पहुंची? Companies governed by any special act. Companies governed by any special act. Last point होची body corporates notified by central government. Body corporates notified by central government. Body corporates notified by central government. This is the applicability of the act. माने act टा का पे सेटा applicable. तो एटार तुमको बिट क्वेश्चंस आसीबो डायरेक्टली जाना पड़छि. And most important होछि हमर 2 3 and 4. 2 3 and 4 are the most important here. काहे गेली कहले गुटे कंपनी रो जेतळो गुटे पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनीज रो जेतळो किछि एक्ट अछि फिर भी जदि कंपनीज एक्ट लागू होछि ता ऊपर तो इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोविजन. काहे गुटे कंपनी केति इंपोर्टेंट नथले दीडा सा एक्ट अंडर सेडा आसियो बुझि पारछो तो फर्स्ट से कौन कहला इंश्योरेंस कंपनीज टू द एक्सटेंट अनगवर्न माने कोन इनकंसिस्टेंट विथ द आईआरडीए एक्ट माने आईआरडीए एक्ट अंडर जेति कि न आसी कि अछि से सब जा कोड जिवो कंपनीज एक्ट रे जिवो. क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी सॉरी बैंकिंग कंपनीज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सहित जोडा आसुनी सेडा सब जिवो कंपनीज एक्ट. एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज इनकंसिस्टेंट विथ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. बुझि पाला? आमे सेक्शन नंबर 1 ला जान लो कंपनी रो मीनिंग जान लो डेफिनेशन जान लो. द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द टाइप्स ऑफ कंपनीज. ठीक अछि. थैंक यू.